Hello students, this lecture is for 11th class, Unit 1 Diversity in the Living World में first chapter is the living world. In the world, the two type of structures are living and non-living. So सबसे पहले we will define about कि living organisms और living structures क्या हैं. Living term we use for the living organisms. So living organisms में life present है, that is a living, or life is present in the living organism. Okay, so living organisms word हमने use किए हैं और living organisms में क्या present है? Life. So how we can define the term is life in living beings? तो लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं कैसे कि लाइफ एक यूनिक फीचर है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ज्वाइन कर गए और वो मॉलिक्यूल्स असेंबल एंड रीअसेंबल अंडरगो वेरियस केमिकल रिएक्शंस and that chemical reactions bring about are all life activities. Just repeating again, life is a unique complex organization of molecules which perform certain chemical reactions in order to bring about life activities. The life activities going on in the living organisms means that living organism is growing, undergo reproduction, shows the very important feature for all the chemical reactions is metabolism, and gives a suitable response to the environment and then adjust itself to the environment. So that is a life. I'm again repeating. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें लाइफ प्रेजेंट है उसमें क्या फीचर्स हो रहे हैं? वो ग्रो कर रहा है. ग्रो कैसे कर रहा है? अगर वो खाना खाएगा, रिस्पायर करेगा, मीन्स डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन क्या है? इसके लिए वन वर्ड अगर हम पिकअप करें, ये उसकी मेटाबॉलिज्म है जिसके कारण उसकी सारी लाइफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं. अगर ग्रो कर रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो अंडरस्टूड है वो अपने आप को अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करेगा एंड इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट इट्स सराउंडिंग. इज इट ओके? सो दैट इज़ हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म कि लिविंग क्या है और लाइफ क्या है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रेजेंट है और लाइफ जिसमें प्रेजेंट है वो शो कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. कौन कौन से? नंबर 1 इज ग्रोथ, नंबर 2 इज रिप्रोडक्शन, नंबर 3 इज मेटाबॉलिज्म, एंड नंबर 4 इज this is all is because of a cellular organization, and the number 5 is consciousness. These 5 points we are going to discuss in details under the heading of, that is, characteristics of the living beings. Means although first topic है chapter का आपका और first chapter है 11th class का, seems to be a very general लग रहा है देखने में कि characteristic features of the living beings क्या होंगे, कि वो ग्रो कर रहा है, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें दैट इज़ रिप्रोडक्शन हो रहा है, एट्सेट्रा. बट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट और फॉर द स्कूल एग्जाम्स, इट इज़ ऑल द कंटेंट्स आर दो वेरी सिंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डायग्नोस्टिक फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग इज नंबर 1 इज ग्रोथ. How we can define the term is a growth. Growth can be defined as irreversible increase in the dry weight and
It is quantitative matter which is measurable. And growth involves the increase in the body mass. So, क्या समझ में आया इसमें हमें कि अगर ग्रोथ हो रही है तो इसमें वेट बढ़ रहा है. Means when the newborn baby is there, that baby means a 1 day, 1 month, year, 5 year, 6 year. So suppose it is a newborn baby is having the weight of 2 kg, 3 kg. So every year there is an increase in the weight. तो वो जो हम बात कर रहे हैं, जो वेट है, जो हमारा हम वेट मेजर करते हैं 10 kg, 20, 40, 50 kg हो गया है, तो ये जो इंक्रीज इन द वेट है जिसको हम क्वांटिटी मतलब मेजर कर रहे हैं 10, 50, 20 क्वांटिटेटिव, तो इससे क्या हो रहा है, बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है. इज इट ओके दीज 2 पॉइंट्स? नेक्स्ट, अगर ग्रोथ हो रहा है जिसमें बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है, अंडरस्टूड हाउ इट इज, कैसे होगा ये इंक्रीज इन द बॉडी मास? बॉडी मास का इंक्रीज कैसे होगा, ग्रोथ कैसे हो रही है, बाय सेल डिवीजन. अगेन दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट बढ़ रहा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो क्वांटिटी के टर्म्स में 10, 20, मास बढ़ रहा है. तो ये हुआ कैसे, क्या इसका मेन फीचर हुआ, ग्रोथ में क्या हो रहा है, ग्रोथ में क्या हो रही है, सेल डिवीजन. सेल डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स कट 1 to 2, 2 to 4, 8, 16. फिर सेल थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएंगे, मतलब सेल एनलार्जमेंट. और सेल जब बड़े हो जाएंगे देन द सेल्स बिकम डिफ्रेंशिएटेड, मीन्स दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर function, that is called differentiation. I think if you find the differentiation term is a new for you, I am repeating this term again with the example also. So growth of a living organisms occur by, number 1 is cell division, number 2 by cell enlargement, and number 3 is by cell differentiation. Differentiation में cells क्या हो जाते हैं, specialized. For example, if we will talk about in the plants, plant में एक young plant है, तो उसमें जब xylem और phloem बन जाएगा तो xylem क्या करेगा, that is start absorbing the water and help in the transport of water. फिर जब plant में leaves बन जाएंगी तो कौन सा टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करेगा, फ्लोएम. इसका मतलब ये जो टिश्यूज जब बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, इसको क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन. कि सेल्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे और वो फिर पर्टिकुलर काम करना स्टार्ट कर देंगे. व्हाट इज दैट कॉल्ड, डिफरेंशिएशन. प्लांट्स में सेल डिवीजन से जो ग्रोथ हो रही है वो उनके पूरा लाइफ टाइम होती रहती है. मीन्स रूट सिस्टम भी बढ़ता रहता है, ब्रांचेस भी बनती रहती हैं, लीव्स भी बनती रहती हैं. मीन्स इट इज़ थ्रू आउट देयर लाइफ. बट इसका ऑपोजिट अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन एज और अ पर्टिकुलर स्टेज में. मीन्स हाइट इन ह्यूमन बींग्स हम अपनी बात करें तो एक पर्टिकुलर एज तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती है. ओके लेकिन इट डज नॉट मीन्स कि सेल डिवीजन या ग्रोथ स्टॉप हो गई है. तब सेल डिवीजन किस में हेल्प कर रही है, अगर कुछ चोट लग जाती है तो हीलिंग ऑफ अ वुंड, दैट इज बाय सेल डिवीजन. वो भी एक पार्ट का, अगर कहीं चोट लग गई है तो उसको हील अप करना, उसको दैट इज रिप्लेस करना, उसको रिपेयर करना भी एक मेथड ऑफ ग्रोथ हुआ. क्या करेक्टरिस्टिक फीचर था ग्रोथ का, ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से. अब अगर हम एग्जाम्पल लें इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन हुआ, तो सेल डिवीजन से तो उनके 2 सेल्स बन गए. अमीबा एग्जाम्पल है, आपका फेवरेट है यूनिसेलुलर एग्जाम्पल में, दैट इज बाइनरी फिशन. एक से जब 2 सेल हुए वो तो रिप्रोडक्शन हो गया, इजंट इट. इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में
The process of growth and reproduction are mutually exclusive events जो दोनों ही आपस में linked है और connected है. ठीक है. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ग्रोथ होती है. अब इसका ऑपोजिट अगर हम देखें कि नॉन लिविंग वर्ल्ड था एक, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रॉक्स हैं, उसके ऊपर सैंड डिपॉजिट होता गया तो रॉक का साइज तो इंक्रीज हो जाएगा. तो इट मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड. एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर बना, फिर ब्रिक्स, सीमेंट एंड ऑल दैट, एक और फ्लोर बन गया. तो नॉन लिविंग थिंग्स में, ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, वाइल लिविंग में क्या था, इट इज फ्रॉम इनसाइड. इट मीन्स इस दुनिया में अब अगर हम बात करें तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रही है और लिविंग में भी हो रही है. इस मीन्स ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ defining feature of only living beings it is. Is it okay about a growth? Coming to the next feature is that is reproduction. Reproduction means the formation of a new individuals of the similar kind, means that is the ability to give birth to young ones is called reproduction. हर organism reproduce करेगा. अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो दैट विल बिकम द एक्सटिंक्ट एंड नो फर्दर प्रोजेनी. सो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज asexual and number two is sexual reproduction. Taking up the first is the asexual reproduction. Asexual reproduction is uniparental, only one parent is required, no gametes and no meiosis और क्रॉसिंग ओवर. ओके, सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. सो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन द केस ऑफ अ फंगस इट इज बाय द स्पोर्स. दैट इज फंगस में, इफ यू रिमेंबर, राइजोपस में स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं. सेकेंड इज maybe by the budding. budding में yeast यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है जो budding से रिप्रोड्यूस करता है, और हाइड्रा मल्टीसेलुलर है बट बाय budding. binary fission and multiple fission both takes place in amoeba. Planarians means a flatworms, they show a very good power of regeneration. In some examples में only the one parent is required. What is the one word is I have used already, uniparental. There is a one more method of asexual reproduction is fragmentation. Fragmentation takes place in the case of a fungus और कुछ filamentous algae में and in the protonema stage of a mosses. This term protonema of a mosses we will use elaborate in the kingdom plantae में later on, but just एक बार रिपीट कर रही हूँ. प्रोटोनिमा का मतलब ही क्या है, फिलामेंटस स्टेज. मॉसेस में जो लीफी बॉडी हो गई है ब्रायोफाइट्स में, लेकिन उनका जो अर्ली डेवलपमेंट स्पोर से होती है वो पहले फिलामेंटस बॉडी बनाते हैं, फिर वो लीफी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दैट इज मॉसेस. और उस फिलामेंटस बॉडी में फ्रेगमेंटेशन से वो डिवाइड कर सकते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के. तो अब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया, एल्गीज एंड अमीबा. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन हुआ तो साथ ही क्या हो रहा था, ग्रोथ. इन द ग्रोथ वी टॉक अबाउट कि जब उसकी ग्रोथ हुई तो उसका रिप्रोडक्शन हो गया. अब हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक पे आए हैं तो अब हम कह रहे हैं तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ. मतलब रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ बहुत सेम है, इक्वल है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि जब उसकी सेल डिवीजन होगा तो उसका क्या हो गया,
रिप्रोडक्शन ही हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज बायपेरेंटल, मीन्स 2 parents is required. Gametes are formed, that is egg and sperm. All organisms or living beings, they reproduce, but in a biosphere there is certain exceptions, and in that exceptions examples are, number 1 is mules. Mules means commonly called as a pony or a खच्चर, horse और donkey के क्रॉस से बनता है, but they are sterile, means they are not being able to reproduce. And the second example is sterile worker honeybees, means the honeybees के beehive में जो workers हैं, they are not being able to lay the eggs, they are sterile. Even certain human couples, they are not being able to have their own babies, commonly called as a sterile or infertile human couples. So मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ एक्सेप्शंस हो गई, तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को क्या कह सकते हैं, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, बट इसका ऑपोजिट अगर हम लें तो नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट, दैट इज रिप्रोड्यूस इट इज. थर्ड feature of the living being is the metabolism. Metabolism means the sum total of all the chemical reactions, so which occurs in the living beings, which involves the breaking up and the building up of the reactions. Repeating, metabolism में की 2 types है, catabolism and anabolism. Catabolism means destructive, means breakdown of reactions, means the food which we take breakdowns by the process of digestion, produces energy, and that energy is used for the all life activities. मेटाबॉलिज्म में एक प्रोसेस में ब्रेकिंग अप होती है और दूसरे प्रोसेस में बिल्डिंग अप होती है. ब्रेकिंग अप से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वही बिल्डिंग अप में यूज हो जाएगा. दैट आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल इज कि हम खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है हमें, और वही एनर्जी हम खाना खाने के बाद यूज़ करते हैं हमारी बाकी की सारा दिन की एक्टिविटीज़ में, लाइफ एक्टिविटीज़. एक और एग्जाम्पल अगर हम लें एनाबॉलिज्म के लिए ही, तो उसमें है कि प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर द फूड. ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स यूज़ किए और खाना बनाया. बिल्डिंग अप ऑफ रिएक्शन इज एनाबॉलिज्म. This metabolic reactions nowadays it can be performed in the laboratory also. लेबॉर्ट्री और जो बाहर हो रही है रिएक्शन उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इन विट्रो और अ टेस्ट ट्यूब. उनको हम लिविंग थिंग्स तो नहीं कह सकते कि लिविंग थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द टेस्ट ट्यूब, बट वी कैन से श्योरली इट इज दे आर लिविंग रिएक्शंस. बट इस टाइप की रिएक्शंस नॉन लिविंग में तो नहीं होती हैं. तो यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बन चुका हुआ है क्या, कि द इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग बीइंग्स, जिसके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है और वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, वो क्या हुआ, नंबर 1 इज मेटाबॉलिज्म. इज इट ओके? इससे पहले जो हमने दोनों किए हैं दे आर नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स फॉर ऑल द लिविंग, क्योंकि उनमें एक्सेप्शंस था. क्लियर? सो इस टॉपिक में आपका इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ ग्रोथ इज कनेक्टेड विद द मेटाबॉलिज्म. अंडरस्टूड है, अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो उसका वेट बढ़ेगा, बॉडी मास इंक्रीज होगा, सेल डिवीजन हो रही है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं. सो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट. सेल, यू नो ऑलरेडी द बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ. तो सेल में अरेंजमेंट क्या होता है, सेल ज्वाइन टू फॉर्म अ टिश्यू, टिश्यूज फॉर्म द ऑर्गन,
organ form the organ system, and all the organ system join together to form a organism. So this is again then we can say is the defining feature of all the living beings. कैसे क्या है? Arrangement of the smaller components of any system into the larger ones, which may takes place at a cell level or organismic level or at ecological level, means species, then population, community, abiotic, biotic, etc. तो organization का मतलब क्या हुआ? Arrangement. This word you should know the terminology also of the bio. So organization is the defining feature of all living beings. Next, the fifth, the last diagnostic feature of the living beings is consciousness, means giving response to stimulus. Other name for it is irritability and response. Understood, all living organisms, they give response to stimulus. That is to the surrounding, all the prokaryotes, eukaryotes, it is. Even the plants, they show the response to stimulus. You know, it is the term is for them is the phototropism, means the bending of the plant towards the light. They give response to the water, hydrotropism, roots ज़मीन के अंदर ग्रो करती है, force of gravity, geotropism, और then hydrotropism. Or that is a one more example if you can recall is Mimosa pudica or touch me not. Leaves droop down हो जाती हैं. That is plants also they give response to stimulus. So it means it is the human beings only, they are very conscious about the surrounding and they have this feature of a self-consciousness. Therefore, it means consciousness is a defining property of all the living organisms. We can, feel about a hot, cold objects, etc. Next, coming to the diversity in the living world. Students, you know that around us we have a lot of plants, animals, and the microorganisms which we can't even see. And the type of the organisms will increase as the area will increase. If we will consider an example, in a dense forest, the number and the kind of living organisms will be more, and that organisms found in a particular area represents a species. To describe the species, the good system of classification and identification to show the relationship among them is very important. As such, till now, approximately 1.7 to 1.8 million number of species is known or described as such. Such a number and the type of organisms on the earth is called biodiversity. Means earth पे इतनी टाइप के plants हैं, animals हैं, बहुत सारी variations हैं उनके अंदर कुछ relationships भी हैं, आपस में वो connected भी हैं, एक group को belong करते हैं और उनके identification features कुछ same है. So इस सब को क्या बोल रहे हैं हम? That is biodiversity. Bio मतलब living, diversity means variations और changes और varieties. कि बहुत सारी varieties हैं plants और animals की on the earth. Or even if we will explore the new areas or even we went to the older ones also, and that is every year approximately in those areas 15,000 new species are discovered. So the main term in the diversity comes is about the taxonomy. Taxonomy bio की एक special science है जो deal करती है study of characteristics of organisms
identification, classification and nomenclature. रिपीटिंग, टेक्सोनॉमी बायो की एक साइंस है, ब्रांच है, जो किससे डील कर रही है? ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. इट मीन्स these four further aspects are the basic to taxonomy. So based on all this, we can say taxonomy is the process of classification of living organisms into different categories, or for the category the term uses taxa. Taxonomy में ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस किया जाता है और वो कैटेगरी को ही कहा जाता है टेक्सा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल कंसिडर एनिमल, डॉग इज अ एनिमल एंड डॉग बिलोंग टू द क्लास मेमेलिया, किंगडम इज एनिमेलिया. ठीक है, तो डॉग, मैमल एंड एनिमल दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट टेक्सास एट डिफरेंट लेवल. मतलब इनकी डिफरेंट कैटेगरी है, एक किंगडम है, एक क्लास है, और एक दैट इज द कॉमन नेम और जीनस और स्पीसीज होगा डॉग का, कैनिस फेमिलियरिस. दैट इज टेक्सोनॉमी. लीनियर्स डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. I think clear this term, taxonomy. So taxonomy में जो हम 4 एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उसमें से 4 एस्पेक्ट्स को, अपने टर्म्स को इलेबोरेट करते हैं. नंबर 1 था इसमें कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन मीन्स डिस्क्राइबिंग द एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, और द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, और its information about surrounding or ecological information. So all this is its characteristics. Number 2 is classification. Classification represents the arrangement of organism into the groups on the basis of their relationships. मतलब क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग की जाती है ऑर्गेनिज्म की. मतलब एक ग्रुप होगा फिशेस का, एक बर्ड्स का, एक मैमल्स का, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. रिपीटिंग, ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब किस चीज़ की स्टडी की जा रही है? फीचर्स. फीचर्स कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है. इज इट ओके दीज 2 टर्म्स? सो the classification is not a new term here. It is from the ancient time. That is, the biologists used to classify the organisms based on their uses. Means उनकी ज़रूरत के हिसाब से they used to classify कि this group of plants is important. We get the food products from them. From them we can get that is a fiber, etc. So that is, the earliest classification were based on the basic needs of food, clothing and shelter. Okay. Coming to the next term is nomenclature, means giving the distinct name to organism. So we will do further for this term nomenclature ki types we will do in the next part. Binomial nomenclature. Identification means finding the correct name and the place of an organism it is. So ये 4 aspects जो हैं, characterization, identification, classification and nomenclature, किसके अंडर आते हैं? टेक्सोनॉमी के अंदर. बट इनको अलग अलग नहीं स्टडी किया जाता. डज नॉट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म के हम कैरेक्टर स्टडी करेंगे फिर उसको क्लासीफाई करेंगे. इन सब में इसका मतलब क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप. वो साइंस बायो की जो इन ब्रांचेस में ही आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंडिकेट करती है और बताती है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज सिस्टमैटिक्स. मीन्स सिस्टमैटिक्स
shows the evolutionary relationship among the branches of taxonomy it is. Means systematics include the taxonomy. पहला पॉइंट क्लियर है, सिस्टमैटिक के अंदर ही है टेक्सोनॉमी वर्ड एक्चुअली, और सिस्टमैटिक्स जो है वो चारों को तो इंक्लूड कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक को भी कह रहा है पढ़ना है, हमें देखना है, क्लासिफिकेशन भी करना है, नॉमेनक्लेचर भी देना है, लेकिन साथ में वो कुछ और एडिशनल बात बता रहा है. क्या बता रहा है? कि देयर शुड बी सम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ब्रांचेस ऑफ taxonomy. This word systematics is derived from the Latin word systema. From which language this word is derived? It is a Latin word systema, which means is the systematic, मतलब ढंग से एक arrangement करना. Linnaeus gets so much impressed with this word systema. तो Linnaeus, who is called the father of taxonomy, उसने अपनी बुक का नेम ही क्या रख दिया? When he did the publication for the nomenclature, the book written by the Linnaeus was Systema Nature.